नमस्कार जी। आज है 24th ऑफ दिसंबर विच मीन्स क्रिसमस ईव और वर्कआउट हो चुका है पूरा। और दरवाज़ा को ओपन कर दो। सो वर्कआउट हो चुका है पूरा। सो मैंने लंच ऑलरेडी बना लिया है, बस घर जाके खाना है। विवेक एंड को लाइब्रेरी गए थे तो आई थिंक वो भी आ चुके होंगे। एंड यस, आई शो यू व्हाट वी डूइंग नेक्स्ट। My daughter with me, Kanika, और as you know कि आज 24 दिसंबर है, it's a Christmas Eve and Christmas Eve पे cookies बनानी पड़ती हैं, Christmas Eve पे brownies बनानी पड़ती हैं. So we're going to bake both of these things, but no, I'm not going to bake it for you guys. It will be Kanika who will going to bake it for you guys. Okay, so let's get started and we'll start with brownie first. We need 100 grams of dark chocolate for this, जिसे मैंने finely chop कर लिया है. So Kanika, what are we doing now? We are mixing the butter with the chocolate. Are you enjoying this? Yep. So we will start with 1 cup of thick curd and we will add 1 cup of brown sugar and mix it properly. Now we are going to add our chocolate and butter mix. इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद ही डालना है. Now we're going to add half teaspoon of vanilla essence and 1 cup all-purpose flour. After mixing it properly, we're going to add 3 tablespoons of cocoa powder. Time to add 1 teaspoon of baking powder. After mixing it properly and removing all the lumps, we will going to transfer it into our greased baking tin. Yummy! Now time to decorate it with some crushed walnuts. Okay, I'm being a little greedy, hence I'm adding some more dark chocolate on top. अब ये जाएगा हमारे preheated oven में और इसे हम bake करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अबाउट 30 to 35 मिनट्स. जब तक हमारी ब्राउनीज रेडी हो रही है, लेट्स प्रिपेयर द डो फॉर कुकीज. और यहाँ मैंने लिया है लिटिल मोर देन 1 कप ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर एंड हाफ टेबलस्पून बेकिंग सोडा. दिस इज अराउंड 110 ग्राम्स ऑफ सॉल्टेड बटर जिसे मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है. आफ्टर इट कम्स टू अ रूम टेम्परेचर, मैं इसे एक बड़े बोल में निकाल लूंगी. Now I'm adding half cup of custard sugar and half cup of brown sugar. We are going to mix everything together and bring it to a smooth consistency. This is the time to add half teaspoon of vanilla essence. Now I'm adding 1 whole egg to this mixture. Time to add all dry ingredients and fold it into a dough. Now I'm going to add loads of chocolate chips into it and fold it all together. Time to put it in the fridge for at least 2 to 3 hours before we put it into the oven for baking. Meanwhile, our brownies are ready and we'll take it out of the oven and let it rest for some time. हमारी brownies अब थोड़ी ठंडी हो चुकी हैं. अब हम उसे equal pieces में कट कर लेंगे. इतनी बेकिंग करने के बाद हमारा स्विमिंग का प्लान बन गया and here we are in our swimming pool. Having a temperature controlled swimming pool is a blessing, especially in winters. And every time we go in the swimming pool, I have to literally drag my daughter out of it. गाइस, हमारी कुकीज रेडी हैं अवन में जाने के लिए. इसे हमने छोटे-छोटे गोले बना के थोड़ी डिस्टेंस पे रखा है बिकॉज अवन में जाने के बाद ये मेल्ट होके फैलने वाले हैं. So here goes our cookies in the oven. इसे हमें 350 फ़ारेनहाइट पे 15 मिनट्स के लिए बेक करना है. And my oven is already preheated.
So 15 मिनट के बाद देखते हैं how does the cookies look like. In fact Santa को भी तो देना है. Yep. तो हमारी cookies and brownies ready हो चुकी हैं. Doesn't it look delicious? Now all we have to do is give a cookie and a cup of milk to Santa. So Kanika, are you excited for this? Yep. So guys, wish you Merry Christmas And a very, very happy New Year. and wish you great success in life. So until we meet next time, Bye.